Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study changes around us. Ready? Steady, start. Observe the given image and answer the following questions for given figures. In this, a physical change or a chemical change. ये आप खुद से करेंगे. Concepts to know: physical change, chemical change, rusting of iron, prevention of rusting of iron. Many changes take place in our surroundings. Growth in plants, flowering, season changes, change in weather, etc. are natural changes. Changes like cooking, cutting of fruits, shaping of cut of fruits, etc. are man-made changes. You have also studied the same changes are reversible where other are irreversible. Okay. हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे सराउंडिंग में, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स की ग्रोथ, फ्लावरिंग, सीजनल चेंजेस, वेदर में चेंजेस, ठीक है, नेचुरल चेंजेस, चेंजेस कुकिंग में आते हैं, ओके, कटिंग ऑफ फ्रूट्स में, शेपिंग या फिर कटिंग ऑफ फ्रूट्स में. अब देखिए ये सारे मैनमेड चेंजेस होते हैं. अब हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस भी पढ़े हैं. अभी जो ऊपर चीज़ें मैंने बताई हैं वो उनमें रिवर्सिबल चेंजेस कौन से हैं और इरिवर्सिबल चेंजेस कौन से हैं. In some changes, no new product is formed, whereas in some changes, new products are formed. On the basis of result of the products formed, changes can be classified into physical changes and chemical changes. Okay. कुछ चेंजेस में क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और कुछ चेंजेस में क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो पाता है. ओके. इसी बेसिस पे जो चेंजेस हैं उन्हें हमने टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. एक आपका हो गया फिजिकल चेंज और दूसरा आपका हो गया केमिकल चेंज. यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं. बटर से बटर मेल्ट्स में, मतलब कि बटर जब वो था वो सॉलिड था और वो चेंज होके लिक्विड बन गया. डो से बेकिंग ब्रेड, आइस क्यूब से वाटर, नेल से नेल, रस्टी नेल. ओके. नाउ physical change. As we know, the properties such as size, shape, color and state of substance is called a physical properties. Thus, a change in the physical properties of a substance is known as physical change. Hence, physical changes are defined as the changes in which there is a change only in the physical property of the substance. In physical changes, no new substances are formed. This change is temporary and is generally reversible. However, sometimes it may be irreversible. Melting of ice, freezing of water, melting of wax and solidification of wax are some examples of physical changes. Okay, देखिए, जब आपको प्रॉपर्टीज में चेंज जैसे कि साइज, शेप, कलर, स्टेट में चेंज देखने के लिए मिलता है उसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. ये किसी भी एक ऑब्जेक्ट की या फिर सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. अब इनको अगर आप चेंज कर सकते हैं तो उसको हम फिजिकल चेंज बोलेंगे. ओके. जो टेम्परेरी चेंजेस हो सकते हैं उन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट होते हैं उन्हें हम इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं. अब देखो, जो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं वो आपके हो सकते हैं जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस या फिर फ्रीजिंग ऑफ वाटर. ओके. मेल्टिंग ऑफ वैक्स या फिर सॉलिडिफिकेशन ऑफ वैक्स, ये सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं. लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू स्टडी फिजिकल चेंजेस. Lab activity 1. Objective: to observe a physical change which involves change in its state of a substance. Materials required: ice cubes, ice tray, glass tumbler and fridge. Procedure: first step, take a few ice cubes in a tumbler, keep them in the open for 4-5 minutes. Second step, now pour this water back into the ice tray and keep it in the freezer for an hour. Again and above, observe it. Observation: after completion of first step, you will see that the ice solid changes into water liquid. After completion of second step, you will get back the ice. Inference: this is a change in the state of water. It is reversible physical change. ये आप खुद से करेंगे. Lab activity 2. Objective: shape changes in physical change. Procedure: collect some chalk powder and crush some chalk sticks into powder form. Mix a little water to it to make a paste. Roll it into the shape of chalk pieces and let them dry. Observation: you receive chalk sticks from the chalk powder. Inference: shape changes occurs in physical changes.
ये आप खुद से करेंगे। लैब एक्टिविटी 3 ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जर्व अ फिजिकल चेंज विच इन्वॉल्व चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ अ सब्सटेंस, मटेरियल्स रिक्वायर्ड पेपर एंड अ पेयर ऑफ सीजर्स, प्रोसीजर ड्रॉ अ ट्रायंगल ऑन अ स्क्वायर पेपर piece of paper, cut out these triangles, can the piece of paper be joined to get back to the original paper. Observation, the size and shape of the paper has changed. Inference, however, each piece retains the property of original paper. This is irreversible physical change. ये आप खुद से करेंगे। Visual literacy, crystallization is the process by which pure crystals of a substance are obtained from the solution of substance in water. This process is used to extract salt from sea water. Okay, crystallization क्या होता है? ये एक process होता है जिसमें किसी भी एक solution से दूसरे solution को अलग किया जाता है, मतलब कि जो solvent होता है solution में उसे अलग किया जाता है। अब जैसे कि कैसे किया जाता है, इसमें salt और सी वाटर में देख सकते हैं सॉल्ट जो है वो अलग हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये आपने प्रीवियस अपने क्लास में भी पढ़ा है। ओके, नाउ लैब एक्टिविटी 4 ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मटेरियल्स रिक्वायर्ड बीकर्स, copper sulfate powder, dilute sulfuric acid, distilled water, filter paper, funnel and burner. Procedure, take 20 milliliter of distilled water in a 50 milliliter beaker. Add 5 drops of dilute sulfuric acid to it. Heat it over a burner. Now add a small amount of copper sulfate powder when it starts boiling. Stir it continuously. Keep adding copper sulfate powder till no more powder can be dissolved. Filter the solution carefully and leave it for 5 hours. Observation, you will see the blue crystals of copper sulfate at the bottom of the beaker. Inference, these are formed by the process of crystallization. ये आप खुद से करेंगे। Chemical change, when two or more substances react, one or more new substances are formed, then the change is called the chemical change or a chemical reaction. Heat is either evolved or observed during the process. Burning of paper, germination of seed, digestion of food, curdling of milk, ripening of fruit or rusting of iron are a few chemical changes. A chemical change is generally a permanent or irreversible change as the formation of new substances with different properties takes place. These are chemical changes that bring out the difference in taste, color, smell, etc. Okay, देखिए केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जब दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं एक या से ज़्यादा सब्सटेंसेस को फॉर्म करने के लिए, तो हम उसे कहते हैं केमिकल चेंजेस या फिर केमिकल रिएक्शन। अब देखिए इसमें हीट भी इवोल्व हो सकती है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर, जर्मिनेशन ऑफ सीड, डाइजेशन ऑफ फूड, ये जो है ये सब क्या है, ये केमिकल चेंजेस है। केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इररिवर्सिबल होते हैं। ओके, वो आप रिवर्स नहीं कर सकते उन चेंजेस को, ठीक है, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। इसमें क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट की जो सब्सटेंस है उसका कलर, स्मेल, टेस्ट सब चेंज हो जाता है। ओके, now the original substances participating in the reaction are called reactants and the new substances are called products. Okay, जो original substances होते हैं जिसमें participate कर रहे होते हैं उन्हें हम reactants कहते हैं। For example, दूध है, ओके, उसे हम बोलेंगे रिएक्टेंट। लेकिन जब वो न्यू सब्सटेंस बन जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि दूध फट गया, अब फटा हुआ जो दूध है उसे दोबारा से आप दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो प्योर मिल्क में, ठीक है, तो जो फटा हुआ दूध है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ लैब एक्टिविटी 5 ऑब्जेक्टिव to understand the changes that occur when an iron object is dipped in copper sulfate solution. Procedure, take a beaker and put some crystal of copper sulfate blue vitriol in it. Add water in a small amount and stir to dissolve copper sulfate completely. The color of the solution is blue. Take a fresh and clean piece of iron needle or hairpin and put it in the copper sulfate solution for some time. Observation, you will notice that the color of the solution has changed to green. Also, when you take out the piece of iron or the blade, a brown colored substance is deposited on it. Since new objects are formed, this is a chemical change. Inference, formation of iron sulfate solution or copper occurs, which can be expressed as under copper sulfate blue plus iron piece
सिल्वर ग्रे इज इक्वल्स टू आयरन सल्फेट ग्रीन प्लस कॉपर ब्राउन। ये आप खुद से करेंगे। लैब एक्टिविटी 6 ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जर्व केमिकल चेंज इन मैग्नीशियम। मटेरियल्स रिक्वायर्ड मैग्नीशियम रिबन, sandpaper, a pair of tongs and burner. Procedure: take a small piece of magnesium ribbon, clean its tip with sandpaper, perform the activity only under the supervision of a teacher. Hold it with a pair of tongs over the flame of a burner. It burns with the bright white light and a powdery ash magnesium oxide MgO is formed. It is different for magnesium ribbon. Dissolve this ash in water in a test tube, stir it properly. This reaction can be represented as follows: magnesium plus oxygen is equal to magnesium oxide. Magnesium oxide plus water is equal to magnesium hydroxide. Observation: on burning the magnesium ribbon, a new substance MgO is formed. MgO when mixed with water forms another new substance MgOH2. Inference: this is a chemical change. ये आप खुद से करेंगे। Characteristics of chemical reaction. A chemical reaction is always accompanied by one or more of the following characteristics. Okay, देखिए chemical reaction जो होता है वो हमेशा accompanied होता है एक या दो कैरेक्टरिस्टिक के साथ, जो कि नीचे बताई गई है। देखिए, हीट और लाइट इज प्रोड्यूस्ड और ऑब्जर्व्ड, चेंज इन कलर हैपेंस, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, फॉर्मेशन ऑफ गैस, चेंज इन स्मेल। देखिए, हीट या फिर लाइट प्रोड्यूस होती है, ऑब्जर्व होती है, ठीक है, कलर में चेंज आता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड की प्रोडक्शन होती है, गैस की फॉर्मेशन होती है और स्मेल में चेंज आता है। एब्जॉर्प्शन और evolution of heat, light or any other radiation. All most chemical reactions are accompanied by change in energy, usually in the form of heat or light. The heat may be released, evolved or absorbed. Accordingly, the reaction are classified into exotherm reaction and endotherm reaction. Okay, देखिए, मोस्ट केसेस में क्या होता है केमिकल रिएक्शन के में, जो एनर्जी है वो आपकी यूजुअली किस फॉर्म में होती है, हीट की या फिर लाइट की फॉर्म में होती है, ठीक है। हीट जो है रिलीज हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है या फिर एब्जॉर्व की जाती है। अकॉर्डिंगली अब जो रिएक्शन होते हैं वो क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि एक्सोथर्मल रिएक्शंस होते हैं या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच द हीट इज रिलीज्ड और इवॉल्व्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, देखिए, ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हीट जो है वो इवॉल्व होती है, रिलीज्ड होती है, इसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ हीट। लैब एक्टिविटी 7 ऑब्जेक्टिव to show that heat is evolved during an exothermic reaction. Materials required: calcium oxide, quicklime, distilled water and beaker. Procedure: take a beaker and put some crystal of copper sulfate blue vitriol in it. Add calcium oxide into the beaker very slowly and carefully. Now touch the beaker slightly from outside. Observation: the beaker becomes very hot upon adding calcium oxide. Inference: this shows that the heat was evolved due to the reaction between calcium oxide and water. As a result, calcium hydroxide, slaked lime, is produced. CaO plus H2O is equals to CaOH2 plus heat. ये आप खुद से करेंगे। Endothermic reaction, a chemical reaction during which heat is observed is known as endothermic reaction. Let's perform an activity to understand this. देखिए, कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट जो है एब्जर्व की जा रही है उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आइए एक एक्टिविटी के थ्रू इसे जानते हैं। लैब एक्टिविटी 8 ऑब्जेक्टिव टू शो दैट हीट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एंडोथर्मिक रिएक्शन। मटेरियल्स रिक्वायर्ड: अमोनियम क्लोराइड, डिस्टिल्ड वाटर एंड बीकर। प्रोसीजर: take a beaker and fill 100 milliliter of distilled water in it. Add ammonium chloride to it and stir it. Touch the beaker from outside. Observation: the beaker feels cold as during the reaction of heat was observed from the surrounding. Inference: this is an endothermic reaction. ये आप खुद से करेंगे। Change in color and formation of precipitate
During a chemical reaction, the product formation may be accompanied by a change in color. When iron nail was immersed in the copper sulfate solution, the blue solution became greenish gray in color. Similarly, many fruits and vegetables like apple, brinjal and potato become brownish in color when cut and kept in open due to reaction with air. देखिए केमिकल रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है कि जो सब्सटेंस का जो कलर है वो चेंज हो जाता है. ओके देखिए जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, अगर आप उन्हें कट करके ओपन में रख देते हैं तो एयर के कांटेक्ट में आके उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है उनके एग्जैक्ट कलर से. ओके नाउ लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड अ केमिकल चेंज ड्यूरिंग विच अ चेंज इन कलर इज अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. एक एक्टिविटी के थ्रू जानते हैं. ठीक है, आइए लैब एक्टिविटी 9. ऑब्जेक्टिव to demonstrate a chemical reaction during which a change in color take place. Materials required: crystals of copper sulfate, dilute sulfuric acid, beaker, iron nail and water. Procedure: dissolve by stirring a few crystals of copper sulfate in water in a beaker. Add a few drops of dilute sulfuric acid to it. A blue colored solution is formed. Now divide the solution into 2 equal parts. Drop a clean iron nail in one part. Leave it for a half an hour. Observation: the solution turns green and there is a brownish deposit of precipitation on the iron nail. Inference: this is due to the formation of new substances, iron sulfate. This is a chemical change. The change is represented as following: copper sulfate plus iron is equals to iron sulfate plus copper. ये आप खुद से करेंगे. Precipitation: the deposition of setting down of certain insoluble substances during chemical reaction is known as precipitate, which are formed as a result of chemical reaction. Precipitate is denoted by the downward arrow. Okay, देखिए प्रेसिपिटेशन क्या होता है? केमिकल चेंज के टाइम पे जब हम लिक्विड में कोई चेंज करना चाह रहे हैं और उस टाइम पे जो उसके पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में जाके रुक जाते हैं, इस जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट. ओके, इसे हम डिनोट करते हैं एरो के डाउनवर्ड साइन से. ठीक है. Evolution of gas and production of sound. In many chemical changes, some gas may be evolved. For example, when calcium carbonate is heated, carbon dioxide gas is evolved. Similarly, when baking powder is added to vinegar, carbon dioxide gas is evolved. The gas bubble effervescence are mostly accompanied by a bubbling sound. The evolution of gas is denoted by an upward arrow next to the formula of a reaction. Let's perform an activity to understand this. Okay, देखिए केमिकल चेंजेस में जब हम गैस जो है वो इवॉल्व हो सकती है, मतलब कि जो है गैस जो है वो बाहर को आ सकती है. ओके, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है वो इवॉल्व होती है. ओके, उसी तरीके से बेकिंग पाउडर को अगर हम विनेगर में ऐड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है वो इवॉल्व होती है. नाउ इसके जो साइन है इसको हम डिनोट करते हैं अपवर्ड एरो से. ओके, नाउ इसके थ्रू एक एक्टिविटी है जिसको परफॉर्म करके हम इसे समझ सकते हैं. लैब एक्टिविटी 10. ऑब्जेक्टिव: to demonstrate a chemical reaction during which gas is evolved along with the production of sound. Materials required: vinegar, lime water, baking soda, bent glass tubing and test tube. Procedure: take 4 milliliter in a test tube, add a pinch of baking soda to it. Hissing sound and bubbles of gas coming out from a test tube. Now pass this gas through freshly prepared lime water. Observation: the lime water turns milky. This shows that the gas given off is a carbon dioxide. Vinegar plus baking soda is equals to carbon dioxide plus other substances. Carbon dioxide plus lime water is equals to calcium carbonate plus water. Inference: thus two new substances, carbon dioxide and calcium carbonate, are formed. This is a chemical change with a change in color and production of sound. ये आप खुद से करेंगे.
Reactions involve both physical and chemical changes. Burning of candle is a typical example. When we burn a candle, both physical change, melting of wax, and chemical change, burning of wick, takes place. ओके देखिए, अब यहाँ पे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जो कि एक सब्सटेंस में हम दोनों एक ही में देख सकते हैं, वो है आपका बर्निंग ऑफ कैंडल. उसमें जब जो वैक्स है जो मेल्ट होती है उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. ओके, और केमिकल चेंज जो होता है, जो उसकी विक है वो बर्न हो जाती है प्रॉपरली. ठीक है, वो हम दोबारा से रिक्रिएट नहीं कर सकते, तो फिर वो हो जाती है आपकी केमिकल चेंज. रस्टिंग ऑफ आयरन. We use different objects made of iron in our daily life. The object can be as small as nail or a needle and as big as car, almirah, bus, drawer, ship, etc. But all these objects, when are left exposed to moist or humid air, a reddish brown flaky layer develops in their surfaces. This brown flaky layer is called rust, and the process of its formation is called rusting. It is a chemical process. Rusting is a slow process that destroys the entire iron object. Okay, देखिए, हम डेली लाइफ में हम अपने आसपास जो है आयरन के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे कि आपका हो सकता है बस, कार, अलमीरा, शिप, ये सब. ठीक है, अगर इन ऑब्जेक्ट्स को अगर हम मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में लंबे टाइम तक छोड़ देंगे तो इनकी जो लेयर है वो चेंज होने लगेगी, एक रेडिश ब्राउन फ्लेश की लेयर आने लगेगी इनके ऊपर, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, मतलब कि जर लगना. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं. ओके, ये एक केमिकल प्रोसेस होता है जो कि पूरे ऑब्जेक्ट को खराब कर देता है. द रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इज इक्वल्स टू रस्ट हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड. Rusting becomes faster if the moisture content in the air increases. It is due to this reason that the part of the ship that remains under water, salty water, rusts faster. देखिए, रस्टिंग फास्टर कब होती है? तब जब एयर के कांटेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा टाइम तक रहता है. ओके, अब देखिए, जैसे कि शिप है, शिप का जो पार्ट है अंडर वाटर में जो रहता है उसमें जल्दी जो है रस्ट लगता है, क्योंकि जो सीज या ओशियंस में वो ट्रेवल करती है वो सॉल्टी वाटर होता है. ओके, A similar reaction in which metals react with moist air and develop a layer on them is called corrosion. Okay, सिमिलरली रिएक्शन जिसमें मेटल्स जो है मॉइस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं और एक लेयर को डेवलप करते हैं, उसको हम कोरोजन कहते हैं. प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. Rusting can be prevented by allowing the surface of the iron to come in direct contact with moisture, water and air. रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड इन द फॉलोइंग वेज. ओके, देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन को हम किस तरीके से रोक सकते हैं ये हम जानते हैं. ऑयलिंग और ग्रीसिंग. अप्लाई ग्रीस और ऑयल ऑन द एक्सपोज्ड पार्ट. जो पार्ट बाहर का है आपके आयरन का, उसको ऑयल या फिर ग्रीस करके सेव करके रखिए. ओके, पेंटिंग. पेंट द सरफेस ऑफ द आयरन आर्टिकल्स. आयरन के जितने भी आर्टिकल्स हैं उन्हें पेंट करके रखिए. गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइज द सरफेस ऑफ द आर्टिकल्स. गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन. It is used to make buckets, boxes, roofing and other useful articles. Water pipes in our homes are galvanized to prevent them from rusting. Galvanized process होता है जिसमें आप जिंक की हेल्प से आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे कि लोहे की बाल्टियां आपने देखी होंगी, वो गैल्वेनाइज्ड होती हैं. ओके, नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. It is the process in which a layer of chromium or tin is deposited on iron in the presence of electric current. Spoons, handles or bicycles, taps and many other articles are electroplated. Okay, electroplating जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें क्रोमियम या फिर टीन को आयरन में डिपॉजिट किया जाता है. ओके, अब इसके एग्जांपल्स हैं स्पून्स, हैंडल ऑफ बाइसाइकिल्स. ओके, एलोइंग.
Iron forms alloys when mixed with certain corrosion resistant metals or some non metals which are resistant in rusting. Stainless steel, an alloy of iron, nickel and chromium, does not rust and is used to manufacture utensils, scissor, knives and surgical instruments. Okay, alloying जो है ये process होता है जो कि आपका जो आयरन है उसको ख़राब नहीं करता. अब ये जो पाया जाता है आपकी यूटेंसिल्स में, सीजर्स में, नाइव्स में और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में. ओके, Visual literacy. The iron pillar located in Qutub Minar complex is made of nearly pure weight iron with trace amount of phosphorus. The unique composition of this along with the absence of significant impurities contributes to its remarkable resistance to rust formation. और देखिए जो आयरन पिलर है कुतुब मीनार के पास जो लोकेटेड है उसमें फॉस्फोरस मिलाया गया है और उस पिलर में आज तक भी रस्ट नहीं लगा है, वो बहुत पुराना पिलर है. ओके, रीड एट अ ग्लैंस. चेंजेस take place all around us. No new substance is formed in a physical change. However, in a chemical change, one or more new substances are formed. Physical change is generally reversible in nature, unlike a chemical change which is irreversible. Changes in heat, light, color, sound, smell, etc. happen during chemical changes. Melting of ice, cutting of paper into pieces, dissolving of salt in water are a few examples of physical changes. Burning of paper, digestion of food and curdling of milk are some examples of chemical change. Crystal of salt can be obtained from salt solutions. Corrosion or rusting is the process in which metals like iron get spoiled due to the formation of a layer in the presence of air and moisture. Rusting of iron takes place only in the presence of both air and water. Rusting of iron can be prevented by painting, galvanization, electroplating and alloying. Key terms to know. Physical change. Change in which physical properties change but to new substances formed. Chemical change. Change in which new substances is formed with properties different from original objects. Crystallization. The process by which pure crystals of a substance are obtained from their solutions. Rust. Reddish brown powdery substance formed on iron objects exposed to air and water. Rusting. The process of formation of a reddish brown colored flaky layer on the objects exposed to moisture. Galvanizing, the process in which layer of zinc is deposited on iron objects. Electroplating, process in which chromium or tin is deposited on iron objects to present the electric current. Alloy, a metal formed by mixing two or more types of metals together. Alloying, process in which some elements are mixed in fixed proportions to achieve their best properties. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.